everyone, and मेरा नाम सारिम खान है एंड अगेन वी आर बैक लाइव फॉर वंस अगेन, क्योंकि प्रीवियस टाइम हम लोगों ने उतने सारे बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ गए थे, बट नाउ अगेन विल ट्राई आंसरिंग मेनी ऑफ द क्वेश्चंस. Here it is, Timba ka gameplay. Well, I didn't get that. Adashri, hi. Timba ka gameplay, hi. The cricket inside how to crack JE with rank 1. रैंक 1 इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस कि जब आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को रैंक 1 से क्रैक करना है, सो व्हाट नॉट ओनली मैटर्स इज कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आपके सामने वाला भी कितने घंटे पढ़ रहा है. एक तो आप ये आइडिया यूज कर सकते हो कि आपको उनसे ज्यादा पढ़ना है, उनसे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है. दूसरा जो आइडिया हो सकता है दैट कैन बी कि आप इतना पढ़ लो सो दैट देयर इज इनफैक्ट नो कंपटीशन, दैट यू कैन बी श्योर कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उस लेवल की कर लो कि यू आर जस्ट श्योर कि आप रैंक 1 से कर लोगे. सो इन जनरल वी कैन डू बाय द फॉर्मर ऑप्शन दैट आपको सामने वाले से ज़्यादा पढ़ना है. प्लस में व्हाट यू हैव टू डू इज ओवर हियर कि यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट्स एकदम सही क्लियर करने हैं, दैट देयर आर नॉट एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस और दैट काइंड ऑफ confusions left. What to do? Well, if you're a dropper, you're still facing problems in JEE Advanced Physics, what you have to do is आपको अपनी thinking JEE Advanced के level के according develop करना है. And what you have to basically do is कि आपको जो advanced के questions है, this is nothing but a combination of multiple means के questions. तो try to analyze those questions, उन्हें part में break करके solve करने की कोशिश करो. And that is how you will do. बाकी advanced के questions बस practice से आते हैं. So you can practice a lot. समझ नहीं आएगा, so try seeing the solution. And solution देखने के बाद एक बार फिर उस पे सोचें and फिर से उसे solve करने की कोशिश करो. So here what matters not is कि आपने एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया जो कि मेंस आपको क्रैक करा देगा, क्योंकि लेकिन एडवांस में हर बार व्हाट यू विल सी इज क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, बेसिक अलग कंसेप्ट्स पे आते हैं, नॉट एग्जैक्टली अलग कंसेप्ट्स बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट्स अलग कर देते हैं. सो इसीलिए आपको सीखना है कि इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करें. तो वो आप सॉल्यूशन देखो, जब नहीं समझ आए बाद में उस पर खुद सोचो, फिर से खुद से ट्राई करो एंड ट्राई टू थिंक ऑफ एन अल्टरनेटिव मेथड, कैसे उसे सॉल्व करोगे. Nirav, how to create critical thinking to solve questions. That is what I just told. Shrestha Pandey, why didn't you give NSE JS exam? Well, you're just spamming there, all these. तो this is again जैसे मैंने already बताया, मैंने NSE JS इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने अपनी biology, chemistry and math for the reason मैं physics पढ़ने में बहुत busy था, तो that is why मैंने NSE JS exam नहीं दिया. आर्यन, हाय सारिम, हाय. मिस्टर केडिया, फिजिक्स में 11 के लिए कौन सा बुक प्रेफर करते हो? मैं डीसी पांडे बनाता. वेल, आई डोंट प्रेफर एनी स्पेसिफिक बुक माई सेल्फ फॉर 11th और 12th और वॉट एवर. मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दैट यू शुड स्टडी मल्टीपल बुक्स एट वंस. मतलब एज फॉर माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि आप 11th 12th में हो, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा मल्टीपल बुक सॉल्व करने का. बट लाइक आई हैव स्टडी लॉट्स ऑफ, मैं एनएससीपी के लिए एलिजिबल हूँगा. Here it is. Standard. So I cannot give that exam. In fact, in standard में I will be this. PT, what's your plan for IIT JEE Advanced? Well, I don't have any specific plans for that. The cricket inside, how to get into MIT surely. Well, to get into MIT surely, if you say, तब यहाँ पे you need a lot of preparation. पहले यहाँ पे clarify कर, तो Olympiads definitely help.
उसके अलावा यहाँ पे सिंस श्योर भी देखा गया है, सो अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वुड बी रियली अ गुड थिंग। देन यहाँ पे MIT में व्हाट मैटर्स द मोस्ट, तो यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन योर एसे कि कैसे आप मोस्ट प्रॉपर फॉर्म में अपने एसे पे लिखते हो। Wali Hassan, can I be a doctor and engineer both because the difference is just a math of math or bio? तब यहाँ पे सिंस रिसेंटली इट्स बीन डन दिस वे कि आप मैथ्स भी ले सकते हो, बायोलॉजी भी ले सकते हो, सो अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन एक साथ में लेट्स से आईआईटी एंड एम्स फॉर इंस्टेंस, एक साथ में आईआईटी एंड एम्स में तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। शुभांशु, हाय सर, हाउ आर यू? हाय, वेल आई एम फाइन। The cricket inside. Would you study at India or abroad? I would rather choose to study abroad. Wali Hassan, so you are amazing. Well, thank you. Dot product zero. How much you scored in J advanced question paper solving? Well, I haven't given exam or something, but by this, if you mean कि जब I got the J advanced का question paper, तो मैंने खुद से based on the number of questions I solved myself, तो उसके according मैं कितना स्कोर कर सकता था। To be very honest, पहली चीज मुझे स्कोर नहीं पता है कि इस साल का J advanced का स्कोर कितना था, and the other thing, I guess the total number of questions was something between 25 and 28. ऐसे कुछ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से, तो इनफैक्ट उसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व किया था। आई गेस इवन वेरी मच इंटरेस्टेड इन यहाँ पे द क्रिकेट इनसाइड व्हाई, वेल द रीजन इज क्योंकि इंडिया में आई गेस उतना अगर आप रिसर्च पे फोकस करते हो, सो यू वांट गेट दैट मैनी ऑप्शंस। रादर इंडिया में बेसिकली आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा फोकस होता है, तो यहाँ पे इंडिया में आईटी सेक्टर में लाइक यू विल सी ऑल दिस पीपल जिन्होंने आईआईटी जेई क्लियर किया है या फिर कोई भी कॉलेज से पढ़े हैं, तब वो सारे उतने इनफैक्ट रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश नहीं होते। सो डॉट प्रोडक्ट जीरो, हैव यू सॉल्व्ड आई रोडो? वेल आई हैवंट डिसाइडेड व्हिच यूनिवर्सिटी वुड गो। आई वुड प्लान टू गो at a university like Cambridge, University of Cambridge. Shaman, which book to study for IIT class 11? वे होते हैं IIT जेई के लिए, वो होते अगर आपको चूज करना है इन दोनों से, तो दोनों में से कोई 11th के वर्मा बेटर है, डीसी पांडे बेटर है, ऑल्सो टेक्स्ट बुक इज मोर ऑफ ओरिजिनल। यहाँ पे जो भी आपको सूट है एससी वर्मा, या फिर गेट अ चांस टू जॉइन IIT Bombay, will you join? Well, it depends on what purpose. If I have to study for my undergrad over there, so I doubt I will. But if I get something like a research internship at IIT Bombay, so in high school only, so that would be pretty good. Wali Hassan, I want to develop my skills in physics. आपने किसी एक subject में choose किया होगा, which seems that it not disconnected हो रहा है। Disconnected? No, like it's going really slow. Shubhanshu, what is imaginary number? Well, imaginary number in mathematics is something like this कि मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं काउंट्स एज काउंटिंग इन रिप्रेजेंट करते हो, लाइक यू कैन हैव 1 book, 2 books, 3 books, फिर यहाँ से और भी जो ये सारे काइंड के रियल नंबर्स हैं, इनफैक्ट यहाँ पे इन्हें नेचुरल कहेंगे या फिर होल फ्रैक्शंस भी ला सकते हो। दैट इज एक बुक को लेट्स से यू हैव कट इट इन हाफ, तो वहाँ पे दैट्स द हाफ बुक, उसका एक पीस। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स आते हैं जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ के जो आपके अराउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके काउंट्स को या फिर समथिंग लाइक दैट इन्हें सिग्निफाई नहीं करते, बट इमेजिनरी नंबर्स रादर जो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर ऐसी कोई भी सब्जेक्ट है, इमेजिनरी नंबर्स वुड रादर सिग्निफाई द हाइपोथेसिस इन ऑल दैट।
समथिंग लाइक दिस। जैसे जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे मोमेंटम में यू विल फाइंड द इमेजिनरी नंबर आयोटा विच इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको इमेजिनरी नंबर्स दिखेंगे। इन्हें यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन साइंटिफिक थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। तो इमेजिनरी नंबर्स आर बेसिकली, इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? दे आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। जो नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स माने जाते हैं, दैट इज कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल एंड इमेजिनरी को कंबाइन करके इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, वेर x इज अ नंबर जो कि रियल टर्म होता है, आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर रूट ऑफ -1 एंड y इज अनदर नंबर। इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है। मग्गो, मैं क्वांटम मैकेनिक्स में रिसर्च करना चाहता हूँ। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। प्रभात Advaita notes, can a student give two different international Olympiads in same year? Well, I guess ऐसा कोई रूल नहीं है which says you cannot, but again जो टाइमिंग का होता है कि they might occur at nearly the same time, तो उसमें clearly एक डिसएडवांटेज पे you might be कि you will have to basically एक ओलंपियाड इस कंट्री में हो तो दूसरा इस कंट्री में हो, so that is one basically disadvantage over here. The pure story, bro, I have a question. Well, you can sure try asking here. Army, how does a bicycle wheel stay upright and where does quantum weirdness end? A bicycle wheel stays upright, you might say, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट यूज होता है। जैसे आपने गायरोस्कोप का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे प्रिसिजन ऑफ गायरोस्कोप्स ऐसा एक टॉपिक होता है। जब आप एक बाइसिकल व्हील को देखते हो, सो क्लियरली जब खड़ी होती है तब उसे मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है देन वो राइड कर रही हो ओवर लेट्स से स्मूथ प्लेन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बाइसिकल की व्हील होती है, ये तो एक तो आपके बेसिकली रोल करेगी एंड आगे जाएगी। एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे काइंड के रोटेशन का, दैट अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस ये टिल्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस नहीं, अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे बाइसाइकिल भी है, अबाउट एक्सिस थ्रू हियर ये टिल्ट कर सकती है। अब यहाँ पे ये जो टिल्टिंग की एंगुलर वेलोसिटी है, द एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये रोटेट कर रही है। इनफैक्ट बाइसाइकिल व्हील, it is moving to stay as in what is name and waving or any physical presses, ये मेरा and just maths, how to study at home, study with and just open it and start studying. That is how you study at home. मग्गू, तुम फिजिक्स में किस ब्रांच में? इट बेसिकली डिपेंड्स कि what sparks your interest at any time, and then left in his life एक बार जब उन्होंने एक सीरीज ऑफ फील्ड में, तो ऐसे रिसर्च के फील्ड्स डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं। बट इफ दैट इज समथिंग दैट आई एम करेंटली इंटरेस्टेड, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग, so that is definitely quantum mechanics and quantum entanglement for sure. Manisha, how does quantum physics work under singularity? Well, under singularity purely देखा जाए तो क्वांटम फिजिक्स कैसे काम कर, डेफिनेटली बी अ बेटर थिंग टू एक्सप्लेन। लेकिन हाँ, वन चीज इज फॉर श्योर कि जनरल रिलेटिविटी से बेटर क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है जब इसे सिंगुलैरिटी के सिचुएशन में लगाया जाए। इनफैक्ट इट डजंट नीड सिंगुलैरिटी एट ऑल। अगर आप देखो तो जैसे यूनिवर्स की बिगनिंग हुई थी, तो पहले तो आपके पास क्लासिकल बिग बैंग मॉडल जो कि जनरल रिलेटिविटी के अंडर वर्क करता है। Then what is Stephen Hawking tried to improve this model, and ऐसे physicist ने work किया over the no boundary theorem, and वहाँ पे बिना basically singularity के beginning of universe को explain कर सकते हैं under the laws of quantum mechanics. So a lot of times आपको singularity की जरूरत नहीं है to explain something in quantum mechanics. So that's a really very important thing in this. All right. Where it is. Sir, The Pure Studio, sir, best book for me. Best book for NEET अगर मैं कहूँ तो HC वर्मा को
you can try the starting questions. रवि मिश्रा सर, मेमोरी को शार्प कैसे करें, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू फाइंड अ वे प्लीज इन्फॉर्म मी एज वेल कि मेमोरी को शार्प कैसे करते हैं. आई डोंट हैव एनी आंसर टू दैट. रिगार्डिंग सेकंड, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? To increase your concentration, you need to have a love for the subject that you are studying, जो भी पढ़ रहे हो, like chemistry. So you need to actually be interested in chemistry, जो inorganic आप उसी से concentration बढ़ता है. Starry out why Heisenberg uncertainty principle exists. Now, if you ask me why Heisenberg's uncertainty principle exists, so maybe that is how God tried to form this universe. लेकिन यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो और यूनिवर्स वुडंट बी सेम एज इट करंटली इज. जैसे लेट्स से फॉर इंस्टेंस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आपने एक एटम को लिया है, एक एटम को लिया है, वहां पे आपको पता है कि किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर इंस्टेंस अगर आप इसके जो अगर आप इसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी से, so that is always greater than or equal to h bar over 2. अब यहाँ पे h bar over 2 आपको दिख रहा है. h bar is basically the modified Planck's constant. modified Planck's constant. यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियरली ये जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अराउंड कैसे भी काइंड की ऑर्बिट में इन हाइजेनबर्ग्स मॉडल, तो कैसे भी काइंड के ऑर्बिट में यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द दिस न्यूक्लियस दैट यू हैव ओवर हियर. यहाँ पे अगर आप देखो कि आपने एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, लेट्स से मोमेंटम को मेजर कर लिया, तब आपको अगर आपने एग्जैक्टली इसके मोमेंटम को मेजर कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पे, मतलब इसको डेफिनेटली तब उसके लेट्स से वेव फंक्शन को लाभ ऐसी चीजें होती हैं. इसे एक एग्जैक्ट पोजीशन मिल गया या फिर एग्जैक्ट मोमेंटम मिल गया जो भी आपने मेजर किया है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो अगर आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली इसकी पोजीशन कहाँ है, कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी इस ऑर्बिट में यहाँ पे, तब जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा वो सीधे इनफाइनाइट पे चला जाएगा बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो क्लियरली सीइंग कि अगर आपने एग्जैक्टली ये मेजर कर लिया तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट पे चली जाएगी. मतलब दैट इज मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक कंप्लीटली अनडिफाइंड मोमेंटम हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स कि कंप्लीटली एक अनडिफाइंड मोमेंटम इन अ मैथमेटिकल टर्म हो. तो ऐसे ही वाइस वर्सा यू कैन से दैट वे. तो बहुत ज़रूरी है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट के हो. और अदरवाइज अगर आपने एक दूसरे को बेसिकली एग्जैक्ट मेजर किया, सो द अदर टर्म गोज इनटू इनफाइनाइट और द अदर गोज इनटू जीरो, जिसकी वजह से ये एटम कोलैप्स कर जाता है. Manisha Shukla, is gravity is an illusion or nature of mass to attract on the bendation of space-time? Well, it definitely is the nature of mass to attract on the basis of the curvature of space-time, and you might classify gravity as an illusion. Stereo out. Why not X and energy? वेल यहाँ पे जो अगर आप एनर्जी के टर्म्स में सोचना चाहते हो तो क्लियरली इट इज इजियर टू स्टेट इट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन की अनसर्टेनिटी. अगर आपको एनर्जी को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो टाइम एंड एनर्जी का है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग कि द अनसर्टेनिटी इन टाइम एंड टाइम्स द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द h bar over में 2. Stereo out. और why not X and T? Again, Heisenberg's uncertainty principle में इन सबको relate कर सकते हो, but it is always an easier term अगर इस तरीके से करें. Heman Singh, has anyone seen that how an electron looks? Well, no one has. All right, एक stationary web, it is something like this कि जब आप एक series of webs at definite ends create करते हो तो वहाँ पे basically क्या होता है कि जो webs हैं हर particle की position of time position definitely vary करती
यहाँ पे ये वेब ट्रेवल नहीं करती है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस व्हाट यू आर डूइंग इज यहाँ पे आपके पास बेसिकली दो एंड्स हैं जिससे आपने एक स्ट्रिंग को टाई किया एंड व्हाट यू डू इज राइज वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन लीव इट। ऐसे आपने बहुत सारे किया है। सो व्हाट यू कैन से ओवर हियर इज व्हाट यू कैन से ओवर हियर, जिससे ये वेब ट्रैवल नहीं करती है, कहीं एनर्जी ट्रैवल नहीं करती है, बल्कि एक यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ एनो physics science in class 10th, please tell us is the strategy कि class 10th में physics study करने के लिए what you can do is it is pretty easy. Class 10th के physics is relatively easy. So all that you have to do is उस type के complicated equation solve नहीं करनी. All you have to do is कि basic concepts learn करते हैं, but do try to learn it in depth as it's very interesting. जब आप class 10th में जैसे let's say for instance optics पढ़ रहे हो, so you can try learning about the dual nature of light from here and there. तो इट इज़ प्रेटी इंटरेस्टिंग. वहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करने, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट पता हो, उसके फॉर्मूलाज पता हो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. Hemant Singh, have you studied Schrodinger's wave equations? If yes, then does every electron have the same wave function or it varies? Well, no, yeah, I have studied Schrodinger's wave equations, not very detailed though. And यहाँ पे every electron has the same wave function. No, every electron doesn't have the same wave function, I guess. What is logics? How it help pH value? HOSI maths. Well, that is basically this thing. This thing, if you are looking at over here, so it is chemistry, in fact. So I don't know. Infinite mathematics factorial. What is infinite? What is infinity factorial? Batao please. Infinity factorial must be like infinity. On a action खुद को start बस एक पर्सन यहाँ पे एक पर्सन वन पर्सन इज पुशिंग अपनी वेलोसिटी देंगे, लेकिन टू मूव टू स्टार्ट वॉकिंग बाय वन सेल्फ सिंस फ्रिक्शन नहीं. Maths, what is relation between vector and trigonometry? Defining the components of vectors over here. यहाँ पे वेक्टर की components and addition में trigonometry helps. I want to give JA exam, so you'll just have to study accordingly. आपके JA exam के is wormhole exist theoretically or practically? Miss Meeno. Well, wormhole does exist in principle. Practically देखा जाए तो it can decay in a very short period of time. So in that particular case आप देख सकते हो, आप इसे observe नहीं कर पाओगे. In addition to the fact कि ये बहुत ही छोटे होते हैं size में. Falcon Star 7133. Hi, hi. Manisha Shukla, we can say that the light is only a shore that we can see in a 3D. Light, in fact, अगर आप देखो, so has no experience until particles of light cannot age. So यहाँ पे light जो होता है वो 3D world में एक point से दूसरे point तक move करता है, but it has no significance in the time dimension, in fact. And light, in fact, exists evaluation of both in the modern quantum physics. Quantum web theory by this enhancing the particle duality. Because I am Marcus FF brother. Which book do I choose for J? After the majority of options go for something like H.C. Verma, D.C. Pandian, Singh and such things, तो इनमें से कोई भी अच्छी बुक आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सही लगे कि इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा है. Miss Mysterious, what is weightlessness?
It's the feeling of being without and due to gravity. तो वहाँ पे you will feel weightlessness, in fact apparent weightlessness. Actual weightlessness आप तब तक experience नहीं करोगे जब तक आप basically out of infinite mathematics. Sir, can we find the factorials of d whole numbers? I have recently started a ninth standard, and I started physics in fifth standard. Evaluation Wali Hassan, well, thanks a lot. Round. Well, Earth is a spherical due to the gravity pushing all possible for spherical. सारे pieces of Earth एक दूसरे को attract करें and crashing it into a spherical shape. तो यहाँ पे एग्जैक्टली स्फेरिकल या राउंड नहीं है, थोड़ी सी बल्ज्ड आउट है क्योंकि इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट्स मतलब अर्थ की रोटेशन, अर्थ रोटेट कर रही है की वजह से थोड़ा सा आउट है. एंड वेलोसिटी में या स्पीड में चेंज आते हैं एक कंपोनेंट वहां पे वेलोसिटी की. तो अगर एक कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है दैट इज हाउ द काइनेटिक एनर्जी विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड. ऑन द अदर हैंड अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो मतलब फोर्स इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इन है क्योंकि इनफाइनाइटेसिमल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा एंड वर्क डन को जीरो डिफाइन किया जी के टर्म्स में समझो. एंड साउथ पोल, well if you mean कि अर्थ की एन पोल एंड एस पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे क्रिएट हुई है तो इस कल कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैसे चल रहा है क्या होंगे ना all written. कितने क्वेश्चन है Business is lacking the light is here. Oh, JP genius boy, hello Sarim, hello. All right, please. चल रहा है It's lacking again. It's all right. Yes. बोल दो लगेंगे ना कल ट्राई मारेंगे कल ट्राई करेंगे नेट नहीं चल रहा है करेंगे नेट नहीं चल रहा है